Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to decode the newspaper that is for 9th July 2020, the Hindu newspaper. So let's start analyzing the newspaper. Before that, here's a small announcement for all of you. We analyze the newspaper from Monday to Saturday. Okay, Monday से Saturday हम analyze करते हैं न्यूज़पेपर और संडे को ऑफ रहता है. संडे को इट्स एन ऑफ. So from Monday to Saturday you will get daily analysis, daily news analysis, and also the class PDF is available on my Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Class का PDF भी Telegram channel पे available है. You can download it from there, as well as the other resources and notes regarding the classes which we are taking on this YouTube channel. Right. Also, if you really like the videos, the classes, the lectures, do not forget to like, share, and subscribe to the channel for the future notifications. And I'm teaching live on Unacademy Plus. You can subscribe to Unacademy Plus. Also, you can use code Sharma20 to get 10% discount on Unacademy Plus subscription. Let's start the class. The first very important news is 3 NGOs linked to Congress under Home Ministry scanner. The Ministry of Home Affairs has formed an inter-ministerial committee to probe alleged violation of various legal provisions by 3 NGOs. The 3 NGOs are IGMT, that is Indira Gandhi Memorial Trust, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट दैट इज RGCT एंड राजीव गांधी फाउंडेशन. ये 3 NGOs हैं जिन ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने वायोलेशंस किए हैं, लीगल प्रोविजंस कुछ वायोलेट किए हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी तैयार की है जो इस पर्टिकुलर वायोलेशन को स्टडी करेगी. The news is that the violations which are being probed, they are related to legal provisions of Prevention of Money Laundering Act, Income Tax Act and Foreign Contribution Regulation Act. ये 3 एक्ट्स हैं जिनको वायोलेट किया है, जिनके प्रोविजंस को वायोलेट किया है कांग्रेस के इन एनजीओज ने. एज पर दी MHA वेबसाइट, the Rajiv Gandhi Foundation and Rajiv Gandhi Charitable Trust, they are registered FCRA associations and a prerequisite for NGOs and other associations to receive foreign donations. The Indira Gandhi Memorial Trust is not an FCRA registered association. So these are the issues. अगर foreign donations चाहिए तो FCRA के अंडर आपको register होना पड़ेगा. But Indira Gandhi Memorial Trust वो legal provision को violate कर रहा है. And there is also an important point that any NGO or association that intends to receive foreign funds has to compulsorily register under FCRA. कोई भी NGO जिसको foreign funding चाहिए FCRA के अंडर उसको registration करवानी पड़ेगी. Foreign Contribution Regulation Act के तहत registration mandatory है और उसको Union Home Ministry monitor करती है, right? And also under the 2010 Act, registered NGOs can receive foreign contributions for 5 purposes only: social purpose, any educational purpose, religious activity, economic और cultural activity, right? तो ये 2 points prelims के लिए बहुत important है. Please note down these 2 points. These are very important for prelims. All right. Now coming on towards the next important news. Trump starts withdrawal of US from WHO. President Donald Trump formally started the withdrawal of US from WHO, and finally Trump had earlier issued threats to deprive the UN body, that is WHO, of its top funding source. अब देखो चाइना में कोरोना वायरस जैसे स्टार्ट हुआ, सबके एलिगेशंस यही है कि WHO ने बहुत ही ज़्यादा लीनियंसी दिखाई है, राइट? सबका कहना यही है कि WHO ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है, राइट? चीज़ों को रोकने की कोशिश की है, डिफेम होने से चाइना को बचाने की कोशिश की है. तो इसी के चलते ट्रम्प जी बहुत ही पहले से धमकियां दे रहे थे कि हम WHO को फंड करना छोड़ देंगे. अब वही उन्होंने अब करके दिखाया है. He has formally started the withdrawal because it has been blamed that WHO was trying to protect China, was trying to stop the information to spread that coronavirus has been first seen in China, or it was first originating in China. It was trying to cover up everything, right? So Donald Trump was threatening WHO from the very starting, and now Donald Trump has formally started the withdrawal process. Now Donald Trump is saying that we are not going to fund WHO. Withdrawal is effective in 1 year, that is July 6, 2021, and it could be reversed by new administration or if circumstances changes. ऐसा नहीं है कि ये permanent है. It is not that it's permanent. This step is not permanent. This is like a threat to WHO, right? Now WHO is the only body capable of leading and coordinating the global response to COVID-19, and if US relationship is terminated with WHO, it is going to affect negatively the global effort to contain this virus, to beat this virus, right?
Now, since assuming office in Jan 2017, Donald Trump has pulled the US out of many global organizations. WHO is just part of it. For example, the Paris Climate Accord. For example, the JCPOA, right? For example, the Trans-Pacific Partnership. यूएस को से भी ट्रम्प जी ने यूएस को वापस लेने की कोशिश करी. देन जेसीपीओए से भी वापस निकाल लिया है खुद को. पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी वापस निकाल लिया है. तो बेसिकली ट्रम्प क्या कर रहा है, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपना रहा है, यूएस फर्स्ट की पॉलिसी, राइट. एक तरीके से धमकी दे रहा है कि देखो तुम्हारा हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, राइट. और उस धमकी को पूरा भी करके दिखा रहा है, राइट. सो इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक एफर्ट्स, हेल्थ एफर्ट्स, ये सब हैम्पर होंगे अगर इस तरीके के स्टेप कंटिन्यू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, राइट. नाउ दिस एडिटोरियल यू हैव टू रीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 4. ये एडिटोरियल जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है आपको. The social contract needs to be rewritten. The pandemic crisis can be overcome only when state is sensitive and it has decentralized steps and ensures empowerment. In moral and political philosophy, social contract theory concerns the legitimacy, the validness of the authority of the state over the individual. What is social contract theory? ये आपका GS पेपर 4 का पार्ट है. Social contract theory क्या होता है, जिसके बारे में इस एडिटोरियल में बात की गई है. बेसिकली एडिटोरियल बोलता है कि अगर हमें किसी भी महामारी से लड़ना है, जूझना है, उसको ओवरकम करना है, तो स्टेट को पहले तो सेंसिटिव होना पड़ेगा सिटीजन्स की नीड्स के टुवर्ड्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के टुवर्ड्स. सेकेंडली डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी एक्टिविटीज. ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथों में सब कुछ ले ले, उसको लोग ग्रास रूट लेवल्स तक चीजों को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, सभी को, हर डिपार्टमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी envisages that consenting individuals have surrendered some of their freedoms and they have submitted to the authority in exchange for protection of their remaining rights or maintenance of social order, right. This theory, many philosophers have contributed their wisdom to this theory. For example, Hobbes and Rousseau, right. बेसिकली इस थ्योरी में क्या होता है कि अगर आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करके चलना है तो आपको अपनी ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा और डिसेंट्रलाइजेशन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. सोशल कॉन्ट्रैक्ट comprises two different agreements. First is that people have agreed to establish society by collectively renouncing the rights they had against one another, right. Secondly, they agree to confer upon one or among them the authority and power to enforce the initial contract. Basically, you have to keep aside your ego, your power and position. You have to come together and fight the issues which the society is facing. Social contract comprises people agreeing to live as under one common law and enforcing those common laws justly. So this is very, very important, not only for GS paper 4 but also for essay, also for your GS paper 1 and prelims, right. Next important editorial, government scheme से related है, case for extension. This article argues for the extension of the MG and REGS, right. तो ये जो आर्टिकल है, अभी हमने 2-3 दिन पहले न्यूज पढ़ी थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी स्कीम, राइट, उसको एक्सपैंड करने की बात की जा रही है, तो उसी के फेवर में ये आर्टिकल है. बेसिकली द आर्टिकल सेज दैट देयर इज एन इंक्रीज डिमांड फॉर वर्क because in nearly 2/3 of the states demand for the Magnarega work has doubled because of migration, large scale migration of people, right, mostly in the month of May and June. Plus, what is the significance of this scheme? Because since its implementation, that was 10 years ago, Magnarega has acted as insurance of rural dwellers, right. जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल माइग्रेंट्स काम करते हैं, right, तो उनको एक पर्टिकुलर जॉब गारंटी मिल जाती है इससे. अग्रेरियन क्राइसिस के दौरान, क्रॉप फेलियर्स के दौरान इस स्कीम के तहत उनको फाइनली जॉब मिल जाती है, उनको फाइनली इनकम सपोर्ट मिलता है, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स? दैट आउट ऑफ द टोटल 4.6 crore households which have benefited from this scheme in 2020, around 8.4 lakh poor households have completed at least 80 days of the 100-day limit for work in a year, राइट. अब मान लो वो 20 डेज भी कंप्लीट हो जाएगा तो आधे साल क्या वो अब भूखे मरेंगे क्या, बिना सैलरी के रहेंगे? इसलिए कहा जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पर द 100-day लिमिट को इंक्रीज करके इट शुड बी इंक्रीज टू 150 और 120, राइट. सो दैट द नेक्स्ट 6 months कैन बी fruitfully surpassed. They can fairly earn something in the next 6 months, right. Next important news, joblessness. Again, this is an editorial, joblessness and opportunity in Tamil Nadu. Basically, this editorial talks about unemployment, which occurs when a person who is actively searching or employment is unable to find work. The most frequent measure of unemployment is unemployment rate, which is computed as number of unemployed persons who are willing to work
and they are actively seeking for a job expressed as a percentage of the total labor force. So यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है prelims के लिए. This editorial is important for prelims perspective. First, you have to understand what is unemployment rate. Second, you have to understand what is labor force participation rate. Okay, clear everyone? Next important news, UAE in support of Open Skies agreement with India. So according to UAE's ambassador to India, AR Al-Banna, UAE is keen to have an open sky agreement with India, right? Open sky policy. So India has an open sky policy with SAARC countries also, right? And under which those beyond the 5,000 kilometer radius, which implies that nations within its distance needs to enter into a bilateral agreement. जो 5,000 किलोमीटर के रेडियस में नेशंस है ना, उनको एक बायलेटरल अग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करना पड़ेगा, जिसके तहत कुछ म्यूचुअली डिसाइडेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स उस एरिया में उड़ सकती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में. ओके, सो इट इज दिस पॉलिसी दैट एम्बेसडर वांट्स इंडिया टू रीविजिट, टू रिफाइन. क्लियर? Now this is very important from prelims perspective. Navy concludes Samudra Setu. Operation Samudra Setu, which was launched by Navy in May 2020, it was a part of repatriation effort of Indian citizens abroad, which are stuck abroad because of this virus. Navy had dispatched two ships, INS Jalashwa and INS Magar, to Mal under Operation Samudra Setu. Right, this is in Maldives. ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सी कंट्रीज के बीच में है ये पर्टिकुलर ऑपरेशन. So Operation Samudra Setu, two important ships are involved, INS Jalashwa and INS Vikramaditya. ठीक है, याद रखना है आपको. India trawlers are back, say Sri Lanka's fishermen. Sri Lanka's northern fishermen have reported a sudden increase in number of Indian trawlers being spotted in the island's territorial waters who illegally, do the fishing activities in the waters. Fishermen along the northern coast of Jaffna Peninsula, especially Point Pedro, have complained about the large Indian trawlers that were reported in Sri Lanka's territorial waters. Now, what are the concerns? Basically, familiar with the brutal impact that Indian trawlers had on their fish production and marine habitat in the post-war decade, scooping out marine organisms, including fishes and prawns, northern Tamil fishermen fear that their livelihoods can be further hit by the trawlers, right? अब होता क्या है, जब हम ट्रॉलिंग एक्टिविटी करते हैं ना, उससे हमारी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है. ट्रॉलिंग एक्टिविटी का गलत इम्पैक्ट पड़ता है सी बेड के ऊपर. ठीक है, अननेसेसरी आप जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप स्कूप आउट करते हो तो उनके साथ उनका नेचुरल हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय होता है. सो दिस ट्रॉलिंग एक्टिविटी ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मरीन animals or organisms, right? So that is why trawling activity, the normal fishermen, they are very afraid of these trawling activities, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड भी खराब होती है, क्योंकि हैबिटेट मरीन ऑर्गेनिजम्स का खराब होगा तो फिशिंग एक्टिविटी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी लाइवलीहुड पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? So this was all for today. I hope you enjoyed today's class. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.